चैप्टर 12 वॉइस। वॉइस वर्ब का वो फॉर्म या रूप जो ये अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट यानी कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। अर्थात सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, 2 पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। Number 1 active voice. A verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject acts. किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। जैसे I write a letter, मैं पत्र लिखता हूं। He writes a letter, वो पत्र लिखता है। इन वाक्यों में I और he वर्ब्स write या writes का संपादन कर रहे हैं, अर्थात I और he पत्र लिखने में सक्रिय है। अतः write और writes एक्टिव वॉइस में है। 2 passive voice. A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone. किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। वर्ब का वॉइस होता है, इसलिए सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में होता है तो सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में होगा। सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में होता है तो सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए वाक्य की बनावट तथा अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। एक्टिव तथा पैसिव सेंटेंसेस के अर्थ में अंतर नहीं होता है। अजय राइट्स अ लेटर। अजय सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, a letter object. Ajay active subject, writes active verb, a letter active object. Passive, a letter is written by Ajay. A letter passive subject, is written passive verb, optional agent by Ajay. इससे आप सामान्यतः एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कठिनाइयां हो तो आप यहां दिए गए स्टेप्स का सहारा लेकर एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। स्टेप 1 एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखें। स्टेप 2 टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करें। स्टेप 3 मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखें, अर्थात MV3 का प्रयोग करें। स्टेप 4 बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। नोट, जरूरत के मुताबिक बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। बाय के अलावा दूसरे प्रेपोजिशन एट, टू, विद आदि का प्रयोग जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है। स्टेप 5 एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। नोट, पैसिव ऑब्जेक्ट्स के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया भी जा सकता है। इन नाउन्स या प्रोनाउंस का प्रयोग किए बगैर सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होता है। संक्षेप में एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस MV3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। From active voice to passive voice.
A. Simple present tense. Rule 1. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस MV1/MV5 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज और आर और एम प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. इन वाक्यों को सुने. एक्टिव आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज. पैसिव a noise is made by Ashish Anurag. Active children like sweets. Passive sweets are liked by children. Active boys love animals. Passive animals are loved by boys. Active Rekha takes coffee every morning. Passive coffee is taken by Rekha every morning. Active we respect him. Passive he is respected. Active Ajit does not help me. Passive I'm not helped by Ajit. B. Present continuous tense. Rule 2. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम प्लस MV4 विद इन ब्रैकेट MV प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम प्लस बीइंग प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. इन वाक्यों को सुने. एक्टिव ही इज राइटिंग अ लेटर. पैसिव अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. एक्टिव भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग. पैसिव अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना. एक्टिव द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच. पैसिव द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स. पेज 207. Active Shweta is answering the question. Passive the question is being answered by Shweta. Active I'm drawing the picture. Passive the picture is being drawn by me. Active they are not picking the flowers. Passive the flowers are not being picked by them. C. Present perfect tense. Rule 3. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. इन वाक्यों को सुने. एक्टिव नूतन हैज रिटन दिस लेटर. पैसिव दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय नूतन. एक्टिव he has washed the plates. Passive the plates have been washed by him. Active Tendulkar has thrown the balls. Passive the balls have been thrown by Tendulkar. Active they have cut all telephone wires. Passive all telephone wires have been cut. Active someone has stolen my watch. Passive my watch has been stolen. Active I have told a lie. Passive a lie has been told by me. नोट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता. डी. सिंपल पास्ट टेंस. रूल 4. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. एक्टिव He stole my book. Passive my book was stolen by him. Active Ajay spoke the truth. Passive the truth was spoken by Ajay. Active the mad dog bit the beggar. Passive the beggar was bitten by the mad dog. Active Dinkar wrote this poem. Passive this poem was written by Dinkar. Active Binay killed the snake. Passive the snake was killed by Binay. Active the police did not catch the thief. Passive the thief was not caught by the police. E. Past continuous tense. Rule 5. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस MV4 प्लस विद इन ब्रैकेट MV प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. जैसे एक्टिव
He was writing a letter. Passive. A letter was being written by him. Active. The farmers were sowing the seeds. Passive. The seeds were being sown by the farmers. Active. The gardener was watering the plants. Passive. The plants were being watered by the gardener. Active. She was not writing a letter to her husband. Passive. A letter was not being written by her to her husband. Active. The children were making a noise. Passive. A noise was being made by the children. Active. Someone was reading the Ramayana. Passive. The Ramayana was being read. F. Past perfect tense. Rule 6. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में यहां दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. जैसे एक्टिव ही हैड रिटन अ लेटर. पैसिव अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम. एक्टिव दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क. पैसिव their homework had not been done. Active the players had won the match. Passive the match had been won by the players. Active the children had eaten all the cakes before the party began. Passive all the cakes had been eaten by the children before the party began. Active the farmers had reaped the crops before the rains fell. Passive the crops had been reaped by the farmers before the rains fell. Active somebody had already warned him. Passive he had already been warned. Note past perfect continuous tense का passive नहीं बनाया जा सकता. G. Simple future tense. Rule 7. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में यहां दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. इन वाक्यों को देखें. एक्टिव द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स. पैसिव द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. एक्टिव पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा. पैसिव मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड. एक्टिव ही विल टीच मी. पैसिव आई शैल बी टॉट बाय हिम. Active no one will answer your question. Passive your question will not be answered. Active nobody will catch you. Passive you will not be caught. Active someone will read the Gita. Passive the Gita will be read. Note future continuous tense का passive नहीं बनाया जा सकता. Page 208. H. Future perfect tense. Rule 8. यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में यहां दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है. स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस MV3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट. इन वाक्यों को देखें. एक्टिव द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट. पैसिव द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस. Active the chemist will have closed the shop by 10 o'clock. Passive the shop will have been closed by the chemist by 10 o'clock. Active they will have painted the whole house by 2 o'clock. Passive the whole house will have been painted by them by 2 o'clock. Active the students will have remembered the teaching of Mr. Thakur. Passive the teaching of Mr. Thakur will have been remembered. Active the central government will have electrified 5,000 villages by the end of next year. Passive 5,000 villages will have been electrified by the central government by the end of the next year. Active they will have built the house. Passive the house will have been built. Note future perfect continuous tense का passive नहीं बनाया जा सकता. विशेष जानकारी योग्य तथ्य. सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म का प्रयोग आधुनिक इंग्लिश में नहीं होता है. लेकिन माइकल स्वॉन जैसे लोकप्रिय ग्रामेरियन के मतानुसार यदि इन टेंसेस के सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बदलने की आवश्यकता पड़े तो बींग जोड़कर बनाया जा सकता है.
चूंकि इसका प्रयोग आधुनिक इंग्लिश में नहीं के बराबर होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन टेंसेस का पैसिव नहीं होता है। पाठकगण यदि इन मत के प्रामाणिकता के विषय में जानना चाहते हैं तो वे माइकल स्वॉन द्वारा लिखित पुस्तक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज का पेज नंबर 458 देखें, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित है। इन वाक्यों को देखें। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव, he has been writing a letter for an hour. Passive, a letter has been being written by him for an hour. Active, the girls have been learning music for several months. Passive, music has been being learnt by the girls for several months. 2. Past perfect continuous tense. Active, Mr. Thakur had been writing this book for 6 months. Passive, this book had been being written by Mr. Thakur for 6 months. Active, Gudiya had been waiting for her lover since 1990. Passive, her lover had been being waited for by Gudiya since 1990. 3. Future continuous tense. Active, the boys will be playing hockey. Passive, hockey will be being played by the boys. Active, all next year the tailor will be sewing the dresses. Passive, all next year the dresses will be being sewed by the tailor. 4. Future perfect continuous tense. Active, they will have been making the toys for 2 years. Passive, the toys will have been being made for 2 years. Active, the students will have been preparing for the NDA examination from 2015. Passive, the NDA examination will have been being prepared by the students from 2015. Note, by plus optional agent object should be mentioned only when it is necessary.